Good evening, you're watching Prime Time on Hornbill TV. Let's have a look at the news headlines. After being denied entry into Nagaland and Arunachal Pradesh, the Gaur Dhwaj Sthapana Bharat Yatra is now facing resistance in Meghalaya. In a shocking case, a class 2 student at a private school was sacrificed in a black magic ritual in Uttar Pradesh's Hathras earlier this week to bring success and fame to the school, police said today. Days after a 38-year-old Kerala man was confirmed to have been infected with the Mpox clade 1B strain, considered to be more virulent and transmissible, Health Ministry on Thursday issued a list of actionable points for all states and union territories to combat the further spread of the virus in the country. Three Naxalites were killed in an encounter with security personnel in Chhattisgarh's Narayanpur district on Monday. The gunfight broke out at around 4 p.m. in the forest of Abujmad of the Chhattisgarh-Maharashtra border when a joint team of security personnel was out on an anti-Naxal operation. Durga Puja is around the corner and devotees are gearing up to celebrate the annual 10-day festival with great fervor and enthusiasm. However, for Bangladesh's Hindu minority, this time celebrations might take a backseat as radical groups issued a warning to Hindu minorities in Bangladesh. Let's look at the news in detail. Days before the Haryana Assembly polls, the Congress party on Friday suspended 13 of its leaders for 6 years for anti-party activities. Among the leaders who were expelled is Sajjan Singh Dhal, the former candidate from the Pundri and Pai Legislative Assembly who joined Congress last year in December. In an official notification, the Haryana Pradesh Congress Committee has said that it received reports that these party leaders and workers were indulging in anti-party activities by fighting the ongoing assembly election against the party candidates. The move is aimed at curbing indiscipline in the party stated in the notification. Former Haryana Chief Minister and Congress leader Bhupinder Singh Hooda meanwhile said that the Congress leaders have been united since the beginning and there is no indifference in the party. The Congress government will be formed in the state with a huge majority. Haryana goes to the polls on October 5 to elect a 90-member state legislative assembly to form its next government. With the counting set to take place on October 8 in 2019, the BJP emerged as the single largest party with 40 seats. Congress won 30 seats. कार्यक्रम में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। आप स्वयं देख लो, इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा में कौन सी सरकार बनने जा रही है। सर, राजस्थान कहना चाहेंगे, कल एक मंच पर थे काफी लंबे समय बाद कांग्रेस के सारे नेता राहुल जी के साथ असंध में। नहीं, सदा ही इकट्ठे थे कांग्रेस के नेता। ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां थी, तभी कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं। साहब, कितनी सीटें हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भजन लाल आए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी पे सवाल खड़े करे, विदेशों में जाते हैं वहाँ क्या करते हैं? अपनी उपलब्धि बताए, 10.5 साल की एक भी उपलब्धि है इनकी। कितनी सीटों का सर? लाडवा क्षेत्र में काफी बारिश हुई है और उनकी काफी 2 घंटे की बारिश में काफी धान खराब हुआ है सर। हाँ, तो उसकी तुरंत गिरदावरी करके मुआवजा देना चाहिए सरकार को। ठीक है, धन्यवाद। The Tripura State Council of Ministers put its seal of approval for creation and filling up of over 1,400 posts in multiple departments. The total number of posts for which interviews would be called soon stands at 1,265, while a total 193 new posts have been created in 2 departments. Cabinet spokesman and Minister Suhanta Chowdhury said the state will soon issue advertisements inviting applications for a suitable candidate for the post of principal in Tripura Agriculture College. A consultant will also be hired for the Tripura Film and Television Institute, the minister added.
The state cabinet had also decided to create new posts in the School Education and Sports and Youth Affairs Department and approved a proposal for creation of a distinct state emblem. আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণকে আমরা অবগত করলাম। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে এই ব্যাপারে আপনারা সেটা করতে পারেন। টোটাল চাকরির কটা এলো? 1265 মানে 1265, 193। তবে বেকারদের জন্য সুখবর, 1265টা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট খুব শীঘ্রই সেটা সম্পন্ন হবে। ক্যাবিনেট তার অনুমোদন দিয়েছে এবং ক্রিয়েশন যেটা রয়েছে সেই ক্রিয়েশনও খুব শীঘ্রই আবার অনুমোদন পাবে ফিনান্স থেকে রিক্রুটমেন্টের জন্য। ক্রিয়েশন অভিজিৎ 193, একটা হচ্ছে 118 হচ্ছে পিজিটি কম্পিউটার সায়েন্স আর 75 হচ্ছে জুনিয়র পিআই ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট। সেটা ছিল পরীক্ষাও হয়েছিল, যাই হোক পরবর্তী সময়ে নতুন সরকার এসে সেটাকে ক্যান্সেল করে আবার একসঙ্গে করার চেষ্টা চলছে। এটা কিন্তু আলাদা, ওই ফিগার থেকে সেটা আলাদা, এটা একসঙ্গে করা হবে বাকিগুলো। এটা দপ্তর বলবে, তবে ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে, এখন ডিপার্টমেন্টকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কবে নাগাদ রিক্রুটমেন্ট প্রসেস শুরু হবে। সকলেই তো মানে কিছু আছে যে আপনি বলেন এটা ডাইরেক্টলি করা হবে আর কিছু বোর্ডের মাধ্যমে করা হবে। বিভিন্ন যে রেভিনিউ সার্কেল এটা কি ডাইরেক্টলি হবে না? রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে প্রথম যেটা হচ্ছে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর 14টা, এটা টিবিএসসি করবে, বাকি সবগুলো ডাইরেক্ট মানে ডিপার্টমেন্ট করবে, বাকি সবগুলো ডিপার্টমেন্ট করবে। আর সেক্রেটারি সেগুলো ডিপার্টমেন্টকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন ডিপার্টমেন্ট যদি চিন্তা করে যে আমি জিআরবিটিকে দিয়ে করব, সেটা করতে পারে। ডিপার্টমেন্ট যদি মনে করে যে আমার সাফিসিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে আমি নিজে পরীক্ষা কন্ডাক্ট করব, সেটা করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু পোস্ট রয়েছে, আপনি যেমন আমাদের এলিমেন্টারি এডুকেশনের জন্য যে পোস্টগুলো, সেগুলো টিআরবিটিকে করতে হবে, যারা টেট এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট করে। কিছু কিছু পোস্ট টিপিএসসির পোস্ট, এগুলো টিপিএসসি কে করতে হবে। আবার গ্রুপ সি গ্রুপ টির ক্ষেত্রে জিআরবিটি করতে হবে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট যদি মনে করে যে না আমি জিআরবিটি কে দিয়ে করাবো না, আমি নিজে করব, তবে সে করতে পারে, কিন্তু তার সাফিসিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকতে হবে। We'll be right back after a short break. To know more about HIV/AIDS, dial toll-free number 1097. Welcome back after the break. Let's have a look at more news in detail. In a shocking case, a class 2 student at a private school was sacrificed in a black magic ritual in Uttar Pradesh, Hathras. Kritarth, 11 years old, was allegedly killed at his school hostel earlier this week as part of a tantric ritual, purportedly to bring success and fame to the school. Police said that 5 people, including the owner of the school, Jasodhan Singh, his son Dinesh Baghel, who was the director of the school, and 3 teachers have been arrested in the case. Police also said that the father of the school director believed in black magic. According to police sources, the accused wanted to kill the boy near a tube well outside the school. However, as they were taking him out of the hostel, he started screaming, forcing them to strangle him to death. During the investigation, items related to black magic were found near the school. The accused had earlier tried to sacrifice another student, a 9-year-old, on September 6, but had failed.
According to the complaint filed by the student's father, Krishan Kushwaha, he received a call from the school administration on Monday informing him that his son had fallen ill. When Kushwaha reached the school, the authorities told him that the school director had taken his son to a hospital in his car. He later recovered his son's body from Baghel's car. Meanwhile, member of the Uttar Pradesh State Commission for Protection of Child Rights, Anita Agarwal, while terming the incident as heinous, said that the committee will take action in this matter. She also added that they will recommend to the state administration to de-recognize the school. बड़ी शर्मनाक घटना है ये। अभी मुझे आप संज्ञान में आया कि हाथरस में अपने स्कूल की प्रसिद्धि के लिए उन्होंने कक्षा 2 के छात्र की बलि दे दी है। इस बहुत ही शर्मनाक से घटना नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इस पे जो है हम कार्रवाई करेंगे। वैसे वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हुई है, 5 लोग पकड़े भी गए हैं, सारी स्थिति सामने आई है। और अब इसकी मैं आँखें मंगाऊंगी और मैं जब तक हो सकता है स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए मैं BSS से और सरकार शासन से कहूँगी कि इसकी मान्यता रद्द की जाए। जो अपनी स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि इनसे नहीं होती है, प्रसिद्धि होती है आपके अच्छे पढ़ाने से, अच्छे आचरण से, अच्छे चीज़ों से प्रसिद्धि होती है। इन चीज़ों से प्रसिद्धि नहीं होती। जिसकी मान्यता ये है कि ऐसे प्रसिद्धि होगी, ऐसे स्कूल को चलना ही नहीं चाहिए, ऐसे स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर देना चाहिए। और मेरे आयोग द्वारा यहाँ पे मैं इसको भेजूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। और ये ऐसा मामला, और कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ पे छात्र छोटे होते हैं, वो अपने टीचरों के साथ भी दिक्कतें होती हैं। अभी मैंने अभी पेपर में आज ही पढ़ी थी कि 2 छात्रों ने शिक्षिका की अश्लील फोटो बनाकर उसको वायरल कर दिया इंस्टाग्राम में, और वो छात्र भी 9वीं कक्षा के लोग थे। तो इस तरह से हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे घर का संस्कार आचरण कैसा है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है स्कूल के आचरण से, उस घर के आचरण से, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ। कुछ घर से सीखते हैं, कुछ स्कूल से सीखते हैं। तो कई जगह स्कूल की भी गलतियां होती हैं, कहीं बच्चों की भी गलतियां होती हैं, कई टीचर्स की भी गलतियां होती हैं। इन सबको हमको देखना पड़ता है, और मैं इस चीज़ में पूरा मैं स्वतः संज्ञान लेती हूँ यहाँ पे बाल आयोग में हर चीज़ का। और मैं यहाँ से आख्या भी मंगाती हूँ, उस पर कार्रवाई भी होती है, उस पर अच्छा शासन भी उस पर कार्रवाई करता है। भी ऐसे कई केसेस हम लोग ने हल किए हैं। अभी पीछे ही एक लड़की जो बहुत परेशान थी अपने पिता से, जबकि उसके पिता पुलिस विभाग में थे, तो उसकी माता ने हमारे आगे गुहार लगाई कि मुझे अपनी बेटी चाहिए, मेरी बेटी को रोज़ मार पीटती है, करती है। तो हमने उसको भी रेस्क्यू करा के भेजा है बनारस। तो इसी तरह बहुत से ऐसे केस आते हैं जहाँ छोटी बच्चियाँ हैं, माँ के पास रह जाती है, बाप से मिलना चाहती है। सामने आई है, इसमें ही बड़ा जघन्य अपराध माना जा रहा है। बहुत जघन्य अपराध है। मैं कह तो नहीं, ऐसे स्कूल को चलने का कोई अधिकार नहीं जिस स्कूल में ये हो कि मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी की बलि ले लूँ। ऐसा स्कूल का फायदा क्या जो स्कूल अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा काम करेगा। ऐसे स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए, और इसके लिए मैं पूरी शासन से और BSS सबसे लिखूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द करें, क्योंकि प्रसिद्धि आपके पढ़ाने से होती है, आपके अच्छे आचरण से होती है। प्रसिद्धि इस तरह से नहीं होती। ये जो अंधविश्वास को लेकर चल रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इसके लिए मैं शासन पे इसकी कार्रवाई करने के लिए कहूँगी। बाकी इसमें कार्रवाई हो रही है, 5 लोग पकड़े भी गए हैं, आगे मैं इसकी कार्रवाई के लिए लिखूँगी। Expressing deep frustration over the U-turn statement made by Security Advisor and DGP Manipur on planned attack by above 900 armed militants that entered Manipur, a prominent women's organization, Imagi Meira, slammed Security Advisor Kuldeep Singh and DGP Manipur Rajiv Singh for failing proper verification. During a press conference at the Manipur Press Club, Imagi Meira convener Thokchom Sujata said that the conflict, which has persisted for more than a year, has intensified to the point where Kuki militants have acquired the capability to launch drone attacks on Meitei populated areas. Amid such situation, is it proper for a uniformed officer to give contradictory statements without proper verification, she asked. Sujata pointed to Security Advisor Kuldeep Singh's initial confirmation of the entry, which was later withdrawn. She also urged the central government to urgently find a resolution to the conflict, stating that Manipur is also a part of India. Burning in Manipur is burning in India. Leaving behind burning state and roaming foreign countries will not bring peace in the state. एक्समेल में आया था, वो जो अंदर घुस गया 900 मिलिशियन, वो सही है या गलत? मतलब क्या है, डिपार्टमेंट और ये हमारा असम राइफल का कनेक्शन, कम्युनिकेशन इतना गैप हो गया क्या?
वही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये गलत है। ऊपर से ये जो असम राइफल का इस तरह का वो वायरल करके वो आने वाला, वो भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सिक्योरिटी, मतलब वो प्रोटोकॉल में भी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, असम राइफल के अंदर के प्रोटोकॉल में भी इस तरह का वो बोलना वो गलत बात है। ये ऐसा नहीं होता है यूनिफॉर्म के अंदर। पर मेरे कहने का मतलब है, वो लोग कह दिया, पर वो सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक तरफ से ये सेंट्रल फोर्स का पावर हमारा, फिर भी उसने, हम लोग ने सोचा था जो चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर भी कल का वो स्टेटमेंट आया था, ये सिक्योरिटी एडवाइजर और वो डीजीपी का, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट आया था। क्योंकि हम लोग भी सोचने लगे थे ना, क्योंकि जो आज तक मे 3 से आज तक हम लोग को मारने का कोशिश कर रहा है, हर जगह हम लोग को जाने दे रहा है, उसी का सपोर्ट कर रहा है क्या सेंटर के थ्रू से? क्योंकि वो लोग ने आवाज को निकाल दिया, वो लोग तो कामपुर में भी कल रिले भी लगा दिया है। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा ना, क्यों नहीं सोचेगा कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे चुका है 20 तारीख को, उसके बाद कल वो गलत है बोलने से तो हम क्या बोले? तो इसी का हमने ये आज प्रेस में रखा है, इसीलिए क्योंकि वो लोग को कह दिया था, खुद कह दिया था 28 कुछ होने वाला है। पर हमारा ये प्रेस में ईमान लोग का यही साइड से बोल रहा हूँ, डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर, कल आप दोनों ने स्टेटमेंट दे दिया था ना, वो लोग हम जो पहले दिया वाला स्टेटमेंट गलत है, नहीं आया है वो 900 जो म्यांमार से आने वाला लो मिलिटेंट नहीं आ रहा है, बताया ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। पर आगे 28 से कुछ हर जो भी जगह हो, हमारा जो भी नुकसान जगह हो, उसी में कुछ अटैक हो गया तो आपके ऊपर में आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना पड़ेगा। Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on Friday said that the concept and idea of one nation, one election is the right way forward from the overall governance and election point of view. However, there are a lot of complications and will require a lot of consultations with states. It may be mentioned that the BJP has been batting for one nation, one election, the idea of holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies. However, opposition such as Congress party are calling the move a weapon of mass distraction and a hot air balloon that will lead to its natural death. Already given our views that as a concept and as an idea from overall governance and election point of view, one nation, one election is the right way forward. There's no doubt about it. But there are many complications for conducting one election for the whole nation, and therefore it will require deep consultation with the states, and only then can we come to the practical side of how we would achieve the one nation, one election, because there are multiple factors. Some states will have 1 year, 2 years left. Some states will just have election and then after that 29 election will come. So how will all that adjustments takes place? I think that is the crucial part. Otherwise, as an idea and as an objective, it's a great thing. We'll be right back after a short break. We invest a lot on healthy living. Are we taking equal care to prevent HIV? Avoid risky behavior. Welcome back after the break. Let's carry on with some more news. After being denied entry into Nagaland and Arunachal Pradesh, the Gau Dhwaj Sthapana Bharat Yatra is now facing resistance in Meghalaya. As the Yatra is set to arrive in Shillong on Friday, leaders of Khasi Students Union and Hinuitrep Youth Council marched to Umroi Airport, where the Yatra group are set to land, to protest against the plan to hold a rally scheduled on October 2.
Following the arrival of the organizations, the state government sent police and CRPF to patrol at the airport in order to contain any untoward situation. It was, however, later confirmed that the Gaudhwaj Sthapna Bharat Yatra would be arriving tomorrow at noon. Speaking to media persons, leaders of the organization said that they will not allow the group to come to Meghalaya and organize the rally to ban cow slaughter. They said no group would be allowed to dictate them on their food culture. They alleged that the Yatra group was coming to create law and order situation in the state, as they are aware that Meghalaya is a beef-consuming state. They also appealed to the district administration to disallow the Yatra to take place. The organizations said that they will be protesting again at the airport tomorrow. Di squat akan confirm lah ada wan dah sih kemudian lah dia. Ada wan tu undang isba pen pai dia. Kerana di squat juga. Wah, ini dengan pe. Toh, ni sudah dah. Aduh, menurut dokter menurut kan kada way wat na ba. Ini wan na mana. Semua kalian juga dengan ni pe. Ini kan kena isu. Sampai kan ni kalau mengendeban restrict ya komitmen di sebenarnya itu turis di bawah. Kita ini komedi berkejuan dulu. Yang sini ada halor bang Iwan di sembilan lang. Buat ngirim concern nak betang halor. These people should not leave Umrah Airport at any cost. We will, our volunteers, our members will be present here along with the people of the Khasi and Jante Hills. We will be giving a press statement calling everyone to gather at Umrah Airport tomorrow at 12 p.m. And at the same time, we also urge the state government through the district administration, both of Ribhoi district as well as the East Khasil district. We have not seen any statement given by them whether they have given any permission or not to these people to hold that rally tomorrow. If they have not given any statement, we urge them. We demand that a statement should come forth from both the district commissioner that the rally proposed to be held by this group should be banned in Shillong city, as well as they should not be allowed to enter the local jurisdiction of Ribhoi and the East Khasil district. And we find it very funny to see that the statement of the Chief Minister yesterday or day before yesterday, where he said that the power lies with the Deputy Commissioner in order to give permission or not. We understand actually the Chief Minister is supposed to be the executive head of the state. He is supposed to look after the peace and harmony of the state, but him washing his hands off and putting the blame in the DC is something that is not acceptable. And I think he has seen various organizations has condemned his statement, but at the same time we also want to make our stand very clear that if these people are allowed to enter Shillong tomorrow, if any law and order problem arises, the responsibility will be on the district administration as well as the Chief Minister and his Council of Ministers. We will not be held responsible, and we have made our stand very clear that these people will not be allowed to enter Shillong at any cost. At any cost means at any cost. If anything happened on the way, or if anything happened on the place where they are holding a rally, the responsibility will be of the district administration and the government of Meghalaya. Here today at Umrah, as HYC, we have made a stand very clear. We will not allow any outsider to come and dictate terms on us. We will not allow them to tell us what to eat and what not to eat. And also at the same time, we will not allow their propaganda to reach our place in which they are supposed to tell us that we should recognize cow as the mother of the nation. See, us Yatra people, we take our mother in a very high esteem. We don't compare them with cows or any animals. So our message is very clear to these people: do not come into our state and disturb the peace and harmony that we are living. And at the same time, do not come and tell us what to eat and what not to eat. And at the same time, also what to worship and what not to worship. We have our own constitutional rights under the constitution as well as the indigenous right. We will practice that as long as we live in this land of ours. The Supreme Court on Friday wrapped the Commission for Air Quality Management over pollution and stubble burning in the National Capital Region and adjoining areas, and said that it needs to be more active.
The Apex Court directed the Commission for Air Quality Management to file better compliance report over its steps to control pollution, stubble burning. Kisan Mazdoor Sangharsh Committee leader Gurbachan Singh Chabba said on Friday that no farmer wants to burn stubble. However, they are helpless. He said that preparing one's field for the next crop is very expensive as new machines are invented every year, making the old ones obsolete. Since the farmers have to procure the machines every year, there are no other ways. He suggested the government to come up with a permanent solution. नाम दस के जिहड़ी खेतां 'च पराली नूं अग लगाई जा रही है, की कहना चाहोगे? मैं गुरबचन सिंह ਚੱਬਾ जी, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਚੜਦਾ ਵਾ। ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ, ਮਟਰ ਲਾਉਣੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਜਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੂਗੀ। That is all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.